दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच बुलेट ट्रेन और सिविल न्यूक्लियर डील फाइनल हो गई है। Is our decision to introduce high-speed rail on the Mumbai-Ahmedabad sector through the Japan's Shinkansen, known for its speeds, reliability, and safety. We greatly appreciate Prime Minister Abe's extraordinary package of approximately $10 billion and technical assistance on very easy terms for this project. एग्रीमेंट पर साइन करते हुए मोदी ने कहा कि भारत की इकोनॉमी में जापान का अहम रोल है। पिछले 1 साल के दौरान हमारे रिश्तों में काफी मजबूती आई है। No partner has played such a decisive role in India's economic transformation as Japan. वहीं बिजनेस समिट में जापान पीएम ने कहा कि मोदी बुलेट ट्रेन की तरह ही पॉलिसीज लागू करते जा रहे हैं। Resolve to carve out a brilliant new era of Japan and India together with Prime Minister Modi. दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट। Dhanyawad. Thank you very much.